Good evening, all of one. Today we learned something about the properties of the bones. The actual previous skills we read about the definition, meaning of anatomy, physiology, exercise physiology, and furtherly we study about skeletal systems and all of the bones. So right now we will learn something about the properties of the bones. What are the properties of the bones? So properties of the bones is very much important. Properties of the bones is very much important of the competitive examination, because in properties of bones, from the properties of the bones, lots of question come here, lots of question come here. Okay. So properties of the bones, here is a concise list to main properties of the bone. Here is a concise list I will give you. Okay. And if you, it's very good for if you write down all those things in a paper for your better examination. So properties of the bone means the what actually bone does. Bone क्या करता है actually. So properties of the bones, there is a strength is also strength. We know about the strength. Strength, bone can be withstand heavy loads without breaking, because we heard about that. Bone is a hard tissue, also connective tissue, and bone act as a lever. Bone also act as a lever. So act as a lever. So bone can give you strength. Bone can give you very much strength. Whenever you are doing a particular task like gymnastics, like any football related skills, and like any others basketball related skills and all those things. And hardness also due to the minerals like calcium and phosphates. There is a very important थिंग्स, ये बहुत ही जरूरी होता है बोन को, लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फेट के लिए. कैल्शियम एंड फॉस्फेट के लिए बोन फॉर्मेशन होता है और बोन का हार्डनेस होता है. ओके. एंड इलास्टिसिटी मीन्स वन थिंग. वंस इलास्टिसिटी मीन इफ इट इज रिजिड ऑब्जेक्ट, then a rigid object cannot become in the initial position of his initial positions. The bone also like a bend. Bone can be bent, and after bending, bone can come the initial position. That's mean bone has elasticity, proper elasticity. Okay. Lightweight, bone are strong yet not heavy, and having the easy movement. बोन लाइट वेट होता है, बिकॉज यहाँ पे बोन का अंदर जो होता है यहाँ पे स्पॉन्ज रहता है, इसलिए बोन क्या होता है, बोन बहुत ही हल्का हो जाता है, हल्का होता है. इन वन ऑफ द नो थिंग्स हल्का होता है, दैट्स मीन 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट. बोन कंटेन्स 60% ऑफ द टोटल बॉडी वेट. इफ ए मैन 100 kg, दैट मीन टोटल 16 kg बोन वेट होता है 1% का. ओके. सो 60% ऑफ द टोटल बॉडी वेट. लिविंग टिश्यू, बोन हैव ब्लड सप्लाई, nerve and can grow and heal. Bone blood cell पर nerve can grow and heals also, heal also. Okay. रिजिडिटी होता है बोन में, रिजिडिटी होता है. रिजिडिटी मतलब बोन बहुत ही रिजिड भी होता है. कभी कभी लाइक फीमर बहुत ही रिजिड होता है ना. फीमर बहुत ही रिजिड होता है. फीमर को ब्रेन नहीं कर सकते तुम, फीमर को कुछ नहीं कर सकते. फीमर बहुत ही बेंड होता है. ओके. सो पोसोसिटी is nothing but the content press, reduce weight and hold marrow. hold marrow, that's mean यहाँ पे जो hold marrow रहता है इसको पोसोसिटी कहता है. ओके. इसको पोसोसिटी. एंड osteogenesis and osteoporosis is caused by the pososity of the reduce the pososity of the bone. Remodeling bone होता है कैसे कि the bone continuously renew and repair themselves. Bone continuously renew and repair themselves. Whenever break down the bones, also bone को repair होना जरूरी होता है. And also bone कैल्शियम फॉस्फेट सबको रिस्टोरेज कर सकता है और रिजर्वियर कर सकता है. ओके. मिनरल स्टोरेज ऑल्सो बोन हैज द वन ऑफ द मेजर properties. Right now we have studied about the, after the properties of the bones, we have studied about the type of the bone tissue. How many types of the bone tissue? Mainly two type of the bone tissue.
mainly two type of bone tissue. Now first one is bone tissue. Mainly two type of bone tissue we have to study. Number one, compact bone. Number one compact bone. number two होता है spongy bone. Here we can consider the compact bone is a hard and spongy bone is soft. Okay. Compact bone, we can found compact bone in outer layer of the bone, and spongy bone inner layer or inside the bone. Okay. So that is the compact bone. Compact bone क्या होता है, dense होता है, hard होता है और outer layer of the bone होता है. And fraction provide the strength and protection also. Found in the strap and diaphysis. Compact bone diaphysis में मिल सकता है. Okay. Structure made by the tightly called osteogens. Spongy bones known as cancellous bones. That it is a lighter spawns and found in the inside of the bone. Its formation, the reduce the bone weight, contain the bone marrow and blood cell also. Reduce the bone and contain the bone marrow also. Okay. Contain the bone marrow also. Reach the bone and contain the bone marrow also. So that is the location. The found at the end, long bone and inside the flat look like the pelvic and sternum. Structure made up a mass-like network called trabeculae. Okay, that is the spongy one. Right now we discuss about the. Right now I will discuss about the articular cartilage. It is the major importance thing. What are actually articular cartilage? Articular cartilage is nothing but a cartilage that help to reduce friction between the bones and during movement. It shock and observe and protect the bone. It helps to smooth, pain-free and joint movement. The joint movement. Articular cartilage. That's mean whenever articulation. What actually articulation is? Whenever two or more bone join together. That is the articulation. In articulation occurs help in articular cartilage. Articular cartilage it is actually the hyaline cartilage. Articular cartilage it is actually the hyaline cartilage. So एक cartilage होता है, इसलिए फ्रिक्शन का कम हो जाता है और पेन फ्री होता है जॉइंट मूवमेंट के लिए. इन ए रिवर्स थिंग क्या होता है? whenever articular cartilage is damaged, then joint will get the pain, swelling and reduce the motility. Okay. And now we came under the types of bone cell. What are the types of bone cell? The type of bone cell mainly there is a 4 type of bone cell. 4 तरह का bone cell होता है. क्या होता है? एक osteoblast actually की osteoblast is mean the builder. Osteoblast mean builder. Builder mean the formation mean the tissue by the producing collagen and other bone matrix is the component. Osteoblast mean the built new bone tissue and producing collagen and other bone type of the component. Location क्या होता है? Found the surface of new bone. न्यू बोन का सरफेस होता है. फाउंड का न्यू बोन का सरफेस होता है. एंड मेंटेन्स द ओस्टियोसाइट्स की ओस्टियोसाइट. व्हाट आर द ओस्टियोसाइट एक्चुअली? ओस्टियो इज द मेंटेनर्स. ओस्टियोसाइट्स मीन द मेंटेनर्स. और एक्चुअली की ओस्टियोब्लास्ट मीन्स that is the builder of tissue producing collagen and other type of bone tissue matrix. Okay. Osteocyte that's mean maintainer. The function, the maintains, monitor
of the bone matrix, maintain monitor of the bone matrix, maintain monitor of the bone matrix. Origin the muscle, the mature osteoblast get trapped in the bone matrix. Role to regulate calcium and communicate other types of bone cell, other type of bone cell. Osteoclast, the break, osteoclast mean the breakers. That's mean here osteoblast mean osteoblast mean tissue producing by the collagen. Osteoblast क्या होता है ना builders होता है. Osteoblast क्या होता है ना builder होता है. ओके builder होता है. Osteoblast की builder होता है. ओके और osteocyte maintainer होता है. maintain mean the monitor and the bone matrix. Okay, osteoclast mean the breakers. Puncture the bone down and the reserve the bone and releasing the enzymes and acid. Enzyme and acid. Structure large and communicated cell. Large and communicated cells. Crucial bone remodeling, repair and calcium balance. Okay. The bone lining cell क्या होता है? Bone lining cell a cover bone surface where no active formation or resorption occurs. Role. What are the role of the bone lining cell? Bone lining cell help to regulate calcium exchange and protect the bone surface. Help to regulate calcium exchange, protect the bone surface. Bone lining cell calcium exchange करता है एवं and protect the bone surface. And bone surface को protect करता है bone lining cell. Then there is a concise list by a table which is bone type, main role and function. The osteoblast mean bone formation. Osteoblast also blast mean formation. Blast होता है ना. Blast मतलब क्या होता है? सबको ध्वंस करना होता है ना, सबको डिस्ट्रॉय करना होता है. तो यहाँ पे क्या होता है ना, ब्लास्ट मतलब क्या, बोन फॉर्मेशन होता है. ब्लास्ट मतलब फॉर्मेशन. न्यू बोन सेल. ओस्टियोसाइट मीन मेंटेन्स करता है. ओस्टियोसाइट मीन मेंटेन करता है. ओस्टियोक्लास्ट होता है बोन रिजर्प्शन करना, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ द बोन टिश्यू. बोन रिजर्प्शन करना मतलब ब्रेक डाउन ऑफ द बोन टिश्यू. ओस्टियोक्लास्ट. बोन लाइनिंग सेल सरफेस प्रोटेक्शन एंड रेगुलेट द मिनरल्स movement. That is osteoblast होता है. Okay. Ossification, here a come under the ossification. Ossification nothing but natural process which is bone tissue form, a development content that adulthood when happen. Ossification nothing but a bone tissue formation. Ossification is mean the bone tissue formation. And osteogenesis means nothing but it also be bone formation, but it is a biological process forming the new bone, and also it's being during the embryonic development and contain the throughout life growth, remodeling and repair. Because bone जब break down होता है तब वो repair करना जरूरी होता है, और repair करने के लिए जो process होता है उसको कहते हैं ossification. ओके, उसको कहते हैं osteogenesis. ओके, osteogenesis fetal development होता है. एक्चुअली fetal development क्या है? व्हाट इज द fetal development? fetal development मतलब जब एक न्यू बॉर्न बेबी जन्म लेता है, उसके बाद उसका ग्रोथ मैच्योर नहीं होता है, उसका ग्रोथ मैच्योर होता है पार्ट बाय पार्ट, स्टेप बाय स्टेप. सो इन दिस स्टेज वी कैन कॉल इट इज द fetal development. ओके, fetal development होता है, बोन इंक्रीज होता है, बोन रीमॉडलिंग होता है, रिन्यूअल होता है, और बोन को रीजेनरेशन और आफ्टर द इंजुरी. इसको कहते हैं ओस्टियोजेनेसिस. Okay, here the meaning osteogenesis means general process of bone formation. Here osteogenesis is mean repair, remodeling, etc. Okay, growth, etc. And ossification is a specific method. Shape formation of the bone. That is the main thing, formation of the bone. Okay, formation of the bone. Okay, now let's discuss about some short question of all those things here, because we are studying about the whatever we study about the properties of the bone. Properties of bone. Number 2, we study type of tissue. Tissue means bone tissue. Number 3, cells of bone. Bones, no? Let's study 3 things. Okay. Then first question, there is some MCQ question. That's very much MCQ question related to these ones.
Actually, which of the following is not properties of the bone? We read out the properties of the bone. Is strength is properties of the bone? Also strength is properties of the bone. Elasticity, yes, definitely elasticity. Transparency, transparency bone. अगर यहाँ पे एक बोन है और यहाँ पे कोई देख रहा है तो यहाँ पे भी वो की देख सकता है कोई चीज़ को, दैट्स मीन ट्रांसपेरेंसी. तो ये कर नहीं सकता है. ओके, ट्रांसपेरेंसी नहीं होता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होता है, रिजिडिटी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, राइट, स्ट्रॉन्ग होता है. दैट्स मीन एयर ऑप्शन विल बी द ट्रांसपेरेंसी, नॉट प्रॉपर्टीज ऑफ द बोन. नॉट इज अ वेरी मच confusing. Even the not mean whenever you are reading in not, that's mean you have to find out the negative things, all those things in negative. Okay, what mineral primarily contribute the hardness of the bone? Hardness of the bone, you know that the calcium and phosphate. So here option will be the calcium. Okay, which bone properties help to resolve shock and reduce injury risk? इंजुरी रिस्क कौन कहता है? हार्डनेस होता है. अगर मतलब हार्डनेस मतलब क्या है? शॉक को ऑब्जर्व नहीं कर सकते. दैट्स मीन इट कैन बी कॉज ऑफ इंजुरी. ओके, पोरोसिटी कैन बी एंड रिजिडिटी कैन बी. व्हाट इज द ऑब्जर्व टू शॉक रिड्यूस मतलब वी हैव द शॉक रिड्यूस मतलब इज कैन बी आंसर ऑप्शन बी, लाइक इलास्टिसिटी. ओके, which property can make bone tightly yet strong? Which property tightly, that means tightly it means the rigidity of the bone. Tight means it means the rigidity of the bone, and prosperity means soft. Okay, prosperity is mean transparency नहीं होता है, transparency. Okay, vascularity that means vascularity भी नहीं होता है. Okay, so what bone tissue dense and from outer layer of the bone? outer layer of the bone हम लोग का कहाँ मिलता है? all of the study, that is the एक कॉम्पैक्ट बोन. यहाँ पे एक बोन है, यहाँ पे क्या होता है? कॉम्पैक्ट बोन. और इंटरनल जो होता है वैसे स्पॉन्जी बोन है ना. तो स्पॉन्जी, दैट इज हियर आंसर विल बी द कॉम्पैक्ट बोन. ओके, स्पॉन्जी बोन ऑल्सो नोन. स्पॉन्जी बोन को हम लोग एक और भी एक तरह से जान सकते हैं, उसे कहते हैं कॉर्टिकल्स बोन. कॉर्टिकल बोन्स. स्पॉन्जी को हमको ये जानते हैं कॉर्टिकल्स बोन. ओके, where is a spongy bone commonly found? स्पॉन्जी बोन कहाँ मिलता है? आउटर लेयर ऑफ द स्कल नहीं, आउटर लेयर ऑफ द स्कल नहीं मिलता है. ओके, स्टाफ ऑफ द लॉन्ग बोन नहीं मिलता है, एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स ये भी नहीं मिलता है. शायद इनसाइड ऑफ द टीथ होता है और एंड ऑफ द लॉन्ग बोन होता है. आई थिंक इनसाइड ऑफ द स्टिक विल बी द राइट आंसर. ओके, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या करता है? कार्टिलेज दैट्स मीन इट्स मीन द ब्लड सेल्स प्रोडक्शन. नो, ब्लड सेल प्रोडक्शन नहीं होता है. ओके, कैल्शियम स्टोरेज ये भी नहीं होता है. आई थिंक कैल्शियम स्टोरेज को बोन का एक कैल्शियम स्टोरेज क्या होता है ना, बोन का एक प्रोपर्टीज है कैल्शियम स्टोरेज. ओके, दैट्स मीन आर्टिकुलर कार्टिलेज इट्स मीन द फंक्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ द रिड्यूसिंग द बोन सेल. ओके, and articular cartilage is made by which type of cartilage? Articular cartilage made by which type of cartilage? Articular cartilage actually mainly हाईलाइन कार्टिलेज से क्या होता है? फॉर्म होता है. हाईलाइन कार्टिलेज से फॉर्म होता है. वी नो अबाउट द देयर इज टू टाइप्स ऑफ बोन्स, हेयर इज ए बोन्स एंड देयर इज ए बोन. सो इसमें क्या होता है? इसमें एक इलास्टिक होता है, इसमें एक हाईलाइन कार्टिलेज होता है, इसमें आर्टिकुलेशन होता है, और इसमें क्या होता है ना, आर्टिकुलेशन होता है. आर्टिकुलेशन करने के लिए हाईलाइन कार्टिलेज जरूरत है, उसमें हम आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं. ओके, why does articular cartilage heal properly? Why articular cartilage heal properly? Because it is a shock absorber. No? Articular cartilage, it is a thrilling, no, it is a not living tissue, no, it's lacks of blood vessel. यहाँ पे कार्टिलेज के क्या होता है? अब ब्लड वेसल नहीं रहता, इसलिए ठीक है. पाठिए तो ঠিক আছে, আমি বেরিয়ে যাব. Okay, so type of bone cell which type of bone cell is responsible for the bone formation? Which type of bone cell is responsible for the bone formation? Osteocyte bone formation. Which type of bone formation? Osteocyte, osteoblast, osteoclast and
Enteroclast is not like this one. Enteroclast is not like this ones. Enteroclast. Okay. Osteocyte mean maintainers. Osteocyte mean maintainers. We know that osteocyte is maintenance. Osteoblast. Osteoblast mean formation ना. Blast mean formation. Blast mean blast हो जाता है, मैंने कहा था ना, blast हो जाता है. Blast mean formation. Formation. Okay. What is the breakdown of the bone tissue? Breakdown. What is the breakdown of the bone tissue? Breakdown of the bone tissue osteoclast breakdown होता है. कास्ट मतलब ब्रेकडाउन होता है, ओस्टियोसाइट मतलब मेंटेनर होता है, मेंटेनर होता है. इट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग्स. ओके. ओस्टियोब्लास्ट मीन फॉर्मेशन. ओके. ओस्टियोक्लास्ट मीन ब्रेकडाउन. ब्रेकडाउन. ओके. ओस्टियोक्लास्ट मीन ब्रेकडाउन है. ओस्टियोसाइट मीन मेंटेनर होता है ना. ओके. मैच्योर कार्टिलेज सेल, देयर बोन मैरो, ट्रांसपेट मैट्रिक्स, बोन मैरो सेल्स. ओस्टियोसाइड में जो होता है, ओस्टियोसाइड में जो होता है, ओस्टियोसाइड में जो होता है वो है मेंटेनर होता है. और इसमें क्या होता है, इसमें होता है और इसमें क्या होता है, बोन मैच्योर बोन सेल और ट्रैप्ड मैट्रिक्स होता है. मैच्योर बोन सेल होता है, मेंटेन करता है. ओके. मेंटेन करता है. जो बोन लाइनिंग सेल प्राइमरीली, बोन लाइनिंग सेल प्राइमरीली क्या होता है, बोन लाइनिंग सेल प्राइमरी क्या होता है, फॉर्म ए न्यू बोन करता है. ब्रेकडाउन ऑफ द बोन, ब्रेकडाउन ऑफ द ओल्ड बोन, नो. इनएक्टिव बोन सरफेस क्या होता है ना, स्टोर सरफेस. इनएक्टिव बोन सरफेस, स्टोर फ्लैट सरफेस, बोन सरफेस, इनएक्टिव बोन सरफेस, लुक सरफेस एंड द कवर इनएक्टिव बोन सरफेस. बोन लाइनिंग सेल इज ऑल्सो बोन सरफेस का कवर होता है, कवर होता है. एक बोन सरफेस उसका कवर होता है, बोन लाइनिंग सेल, बोन लाइनिंग सेल कवर होता है. ओके. which of the following type of ossification from flat bone like skull? Which type of ossification from flat bone like skull? flat bone কোথায়, endochondral, intramembranaceous, okay. So what type of bone that is, it is the endomembranaceous bone होता है, endomembranaceous होता है, perichondral नहीं होता है. ओके. perichondral नहीं होता है. So endomembranaceous bone, I'll discuss about, actually it is, I'll discuss in other video. It's a very much important things. Endochondral. Okay. It is very much important things. Okay. It is what actually it is. What actually it is? It is a cartilage. Like various type of cartilage. One of the cartilage is hyaline cartilage. Hyaline cartilage. Okay. What appearance? Actually, this is the incomplete questions. Appearance. Okay. The growth plate, also known as the growth plate. The growth plate, also known as the growth plate. What actually growth plate is? Growth plate is what actually growth plate is? Growth plate is what actually growth is? Osteoid. Osteoid का हम लोग growth plate कहते हैं. Osteoid. Osteoid. What actually osteoid is? Osteoid mean जब fetal, जब neonate एक growth होता है deliberately, fetal development होता है. Okay. Osteogenesis refer. We know about the osteogenesis. Osteogenesis, what actually it is? Osteogenesis, formation of the bones, the bone formation. Bone, not information, not. Okay. Breakdown of the bone is sites. Okay. Breakdown of the bone is class, osteoclast. Osteocytes mean maintainer. Osteoblast in formation. That's mean osteogenesis is known as the bone formation. Okay. And bone infection, not bone infection, there will be no answer about the bone infection. Okay. What is the biggest earlier osteogenesis? Biggest earlier, what cell play a biggest earlier osteogenesis? Biggest earlier osteogenesis, what would be the answer of it? Biggest earlier osteogenesis, that is the earlier osteogenesis, that is the biggest earlier osteogenesis, the osteoblast. Okay. So I read the all of those questions, 20 questions. We read out about the all of those things. All of those things like type of bone cells and bone formation. Okay.
Thank you so much.